Previously on Plan9. Plan9 was conceived many years ago. I moved back to Pakistan in 2007, and while I was teaching in a university, I started working on an idea that had some commercial appeal. एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेस में कोई ऐसा काम करना चाहिए हमें जो कि बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा इकोसिस्टम के लिए. Since its conception, Plan9 has incubated 150 startups. A project of the Punjab Information Technology Board, Plan9 is Pakistan's largest tech incubator that was launched in August 2012 to give budding entrepreneurs the opportunity to change their business dreams into a reality using technology as the key component. Today, Plan9 has evolved into more than just a technology incubator. It's now a whole ecosystem for technological innovation and entrepreneurship along the lines of Silicon Valley, with impact all over Pakistan. This series follows the story of 5 entrepreneurs. A college dropout who reinvented the way business owners use Wi-Fi. An educationist who gave the donation process complete transparency. 2 engineers who revolutionized the way music is consumed. A business graduate who gave car wash a whole new meaning. A shopaholic mum who made shopping for used items hassle-free and affordable. मुझे पता ही नहीं था कि Plan9 क्या है, किस तरह से आगे जाएंगे, सिलेक्शन होगी नहीं होगी. मुझे नहीं पता था कि इनक्यूबेटर्स भी कोई चीज़ होते हैं. You can get into an incubator and they would support you with your idea, your product and everything. Eventually we found out कि Plan9 एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर incubators को, startups को फंड भी किया जाता है, उनको सपोर्ट भी की जाती है, mentoring sessions भी होते हैं. Before coming to Plan9, मैंने एक जो चीज़ की थी that really gone into my favor was I validated the idea. What I did was I just made a Facebook page and inquire from people that are these sort of the service that people are looking for. Being a senior person, I consider myself senior citizen. If you say कि Plan9 में सारे बच्चे हैं और startups हैं और हम इतने senior होके Plan9 में जब first day आके बैठे हैं तो मेरे लिए काफ़ी वो था कि यार मैं बच्चों के बीच में बैठी हुई हूँ. बट स्टिल डेट वाज द टाइम आई हैव रियलाइज़ कि नहीं, मैं भी यहाँ वही चीज़ें लर्न करने आई हुई हूँ जो मुझे नहीं पता और इनको भी नहीं पता है. सो आई डोंट नीड टू बी शाय. In order to get into Plan9, the first phase is to apply online. Once a team is shortlisted, it has to go through 2 pitching sessions. The first one is a 2-minute elevator pitch, followed by a 15-minute presentation on stage. So the first day we had to do our 2-minute elevator pitch. We had been pitching for so long for our previous startup that we kind of knew what to do, so we were kind of confident about it, maybe a bit too overconfident that we kind of slept down. What happened was that Khalid was the one pitching, I was right beside him. So we went inside, we pitched, we told them our idea in a quick 2-minute span that what Patari is, it's a music streaming platform, it's gonna earn artists money. But what happened was that Khalid forgot to go over the financial numbers. So the guy who was judging over there, he quickly asked that something about financials. So that was one point we quickly got stuck at. पिचिंग मेरे उससे स्टार्ट हुई और मुझे उस पर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स और फीडबैक्स मिले कि आपकी पिच देख के लोगों ने मुझे कहा कि हम तो एक लम्हे को शॉक हो गए थे कि यार फर्स्ट स्टार्ट ही इतनी अच्छी पिच से हुआ है, हम लोग क्या करेंगे. I was very much nervous, I was very much confused कि अगर उसके बाद मुझसे questions किसी ने पूछ लिए तो क्या होगा. Because on one side I was working in school as a head. एक तरफ मेरे पास वो टेंशन्स थी और दूसरी तरफ जो था I was preparing the pitch. खैर मैं चली गई वहाँ पर. अब उसके बाद जब मैं वहाँ पर गई मैंने देखा there were like 8 judges. So उन्हें तो देखकर वैसे, and they were all entrepreneurs, they were all experienced and they were asking very tough questions from all the companies. But luckily उसमें ये हुआ कि one of my brothers was with me who is an entrepreneur. तो pitch तो मैंने दी और उसके बाद my brother was there to answer the questions actually.
Car Butler was the third project that I've pitched in Plan 9. So I know a bit about Plan 9. I know what is incubation and how does it work and how all the process works. अब वो एलिवेटर पिचिंग का रिजल्ट आया तो देयर वर 20 टीम्स सेलेक्टेड और अब वो बताए जा रहे हैं हमारा नाम कहीं नहीं आ रहा तो वी वर स्टैंडिंग बिहाइंड एवरीवन इन द ऑडिटोरियम अब पीछे हम खड़े थे साथ सारे दोस्त थे वो एलुमनाई थे प्लान 9 के वो कह रहे थे बेटा सेलेक्ट नहीं हुआ तो कह रहे थे नहीं हम पक्के सेलेक्ट हैं टेंशन ना लो तो और इन दी एंड वही हुआ कि 16th नंबर पे अनाउंसमेंट में वाईफाई जन का नाम आया पिचिंग सेशन में जब सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद एक थर्ड स्टेज थी दैट वाज ऑफ द प्रेजेंटेशन थी 10 to 15 मिनट्स की उसमें हुआ ये है कि जजेस तो थे वही सारे अब मेरे सामने वहाँ पर एक ऐसे जज आए आई मीन ही वॉज टफ हिज फेशियल एक्सप्रेशंस वर वेरी स्ट्रिक्ट और उन्हें देख के तो मैं सब कुछ भूल गई जो मैंने याद किया हुआ था क्योंकि मेरे लिए नया एक्सपीरियंस भी था फिर एंड ही वॉज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी खैर फिर मुझे जो स्लाइड्स पे पढ़ना आता गया मैं वो पढ़ती गई बस आई डेंट नो व्हाट आई वाज डूइंग आई स्टिल रिमेंबर और अगले दिन प्रेजेंट करने की अब जब मैंने नेक्स्ट डे आके लिस्ट में देखा तो हमारा नंबर था 13th प्रेजेंटेशन का तो सिंस आई वाज यूजिंग अ मैक फॉर प्रेजेंटेशन तो उन्होंने कहा जिनके पास मैक्स है हम उनकी प्रेजेंटेशन एंड में कर रहे हैं तो स्केड्यूल हुआ वी वर ऑन द लास्ट 20th हम लोग थे और मुझे पता था जजेस सो चुके होंगे उस टाइम तक क्योंकि कितना 20 स्टार्टअप्स हैं और 15 मिनट की पिच हर बंदा दे रहा है तो आप कैलकुलेट कर लें जजेस के लिए कितनी मेहनत का काम है सो उस वक्त मुझे लगा कि वाकई अब इसके बाद कोई चांस नहीं है और हमें वहाँ से अब निकाल दिया जाएगा अब दैट वाज द एंड एंड आई हैव फेल्ड आई कांट डू दिस एनी मोर और मैंने दिल में सोच लिया था चलो कोई बात नहीं जॉब तो है ना वो तो कर ही रही हूँ सो इट्स ओके सेलेक्ट 10 out of 20 तो जब रिजल्ट आया तो वी वर चोजन और जो है दैट द एक्साइटमेंट ऑन शोएब्स फेस एट दैट टाइम वाज अनमैचेबल मुझे ऐसी एक्साइटमेंट कभी नजर नहीं आई किसी के चेहरे पे तो ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी that he has achieved something in his life and that was for me it was a validation कि हमें प्लान 9 ने सेलेक्ट कर लिया है तो that means कि we are up to something और जो है now we have to just focus on this thing and forget about everything else. That was again a very pleasant surprise when we got third position in that presentation as well. Kind of expected that we might get selected and we were happy that we got selected but not exactly over jubilant that oh wow we've gotten selected because kind of expected it but we're really happy and glad that we got it. Even if we didn't then we'd have to find out some other way but we were happy that we got it. We are literally giving people with hopes, dreams, aspirations and ambition a platform to materialize that, to make it happen for themselves and hopefully make that happen for Pakistan. This is just the beginning of a journey. Stay tuned to see how it all pans out.